किस को नौकरी कर भाई अपने कारोबार खुद ही खोल लें इसके बाद आप कारोबार मेरे अलावा सबको भैया सीन ये है कि so we were having a discussion. I think our microphone went off, so if whatever Alfred was saying abruptly went off, I'm sorry. कि भाई कोविड का टाइम है, कुछ भी हो सकता हमने सस्ता माइक लिया. So the thing is that we were having a discussion that, and this discussion of us musicians who've been into the business for at least a decade now, if not more than a decade, is how do you evaluate yourself as a musician? That at what point do you say that अच्छा ठीक है कि XYZ artist has asked you to come and play for them or record for them, and how do you evaluate yourself? So नहीं मैं पहले नहीं. So elaborate. I think कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा. अच्छा हम कुछ नहीं होगा. मैं आंखें बंद कर दूँ. अच्छा इसको बोलने दो. अच्छा चलो सी देखो जिस तरह मैं evaluate करता ना सिचुएशन को एक्चुअली वो ये है कि see the amount of years you've put in and the level you're at, how much you are being called for a session, for a live session, for a studio session. अब उस पर डिपेंड करता है how you what you think about your skill, you know, if a artist calls you and says कि यार you know I can pay you this much and would you want to play, अगर कोई नया आर्टिस्ट है तो usually budget कम होता है. What I do is if I really like the song and it's a new artist, I would sometimes play it for free. Agreed. और अगर मुझे लगता है कि यार क्या था मेरा बजट कम है तो मैं उसमें कर देता हूँ अगर मुझे म्यूजिक पसंद है. इसमें तो हम म्यूजिशियन लोग ना जन्नती लोग हैं भाई. I believe क्योंकि सारे यही I करते know हैं. for a fact that almost every musician at some point has done work for free just for the love of the song or for the love of the person. That एक बंदा इतना अच्छा है कि he's asking you for your help and you. क्योंकि देखो अगर हम कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे अच्छे म्यूजिशियंस के लिए तो वो और म्यूजिक आएगा नहीं. और म्यूजिक नहीं आएगा. The other thing is अगर कोई आपको you know renowned you know singer या कोई आर्टिस्ट बुलाता है और वो कहता है कि यार मैं आपको ज़्यादा नहीं दे सकता, you know, तो मैं you know I keep it very straight कि you know if you can pay me this much and this suits you know my level of playing, if you can pay me that much fine, otherwise you know बात भी खराब नहीं होती इससे. Because also I think the what I feel is that I evaluate it with basics. Like for instance, we were just having a discussion that a basic industry standard cymbal setup, and every one of us have that here. Almost every drummer who's playing in mainstream has a industry standard cymbal setup or an industry standard drum set, right? If you go online, it doesn't take any rocket science to know that you go online and you look at a bare basic drum set also, a mid-level drum kit, आपको $1,000-1,200 से कम में तो नहीं मिलेगा. नहीं मिलेगा. ठीक है? That's 150,000-200,000 rupees right there. The setup that we use in the studio, the setup that we use for live, God knows that हमने गाड़ियाँ नहीं चलाई या हमने अच्छे कपड़े शायद नहीं खरीदे होंगे ईद पे. ईद पे कपड़े नहीं खरीदे या यार नया आईफोन है आज कट करो यार आईफोन कट करो हम एक अच्छा स्नेयर ड्रम ले लेते हैं. You see what I mean? Right? This is exactly right. You see other people doing stuff and you be like, wow, that's pretty cool. I want to get that. You get inspired. I'd rather go buy another set of cymbals, right? And that's how you build up. You build up your arsenal of equipment, and then you showcase your talent on that, and that's what actually puts you on the map, not just in Pakistan, anywhere in the world. You've done stuff at Coke Studio, you've done stuff at Nouri and Coke Studio and Mikal, you've done stuff at Atif, and there are people from everywhere, from across the border to everywhere. You play, and you have a lot of locals also coming sometimes and watching you play, right? And they follow you, like, wow, this guy's got some serious chops. And you're representing your country. So when you have all these grand things happening for you, and कोई बंदा आके कहता है जी टमाटर कितने के भाई, like they're literally dealing with you as if you're selling vegetables, then how
how does one evaluate that? How would you approach something like that? Because I know I've been through that many times. और कभी कभार ये होता है कि मजबूरी में you end up doing it is because you don't have an option, बिल्कुल. right? And then sometimes while you're doing it, you feel so bad about it that you start to evaluate yourself, saying that am I in the right business or not? Because it's a mixture of survival and it's a mixture of creative. You're trying to be creative and you're trying to survive. आप अगर आप भूखे हैं तो आप जाके वही वाली बात है कि Vinny Colaiuta is also playing for Faith Hill and then he's also playing with Jeff Beck, right? Yeah. So I feel that, and this is something especially for those people who are new into the business or who are trying to get into the business, whether guitar players, whether bass players, whether they're keyboard players, whoever, that they got to understand that where the musicians come from. And I'm not saying that the artists are not considerate, or I'm not saying the musicians are greedy. It's just something where you need to understand where you have to maintain that balance It's all about for yourself. Yeah. For yourself. Yeah. वो एक बड़ा interesting. I always keep this line in mind while we were recording Ek Alif with Noori and Sain Zahoor. उसमें एक बड़ा interesting line था, जो ना जाने हक की ताकत, रब ना दे उसको हिम्मत. Okay. You know, and I always went by that line, saying that if I don't know my worth, even God's not going to help me. Yeah. Even God's not going to help me survive in this world as a musician, you know. So I think this sort of a thing, and I think people like us and a few others in the mainstream have been blessed and very lucky that we got a scene going where we made a living out of this. But then a lot of people have not, unfortunately. It could be wrong decisions, it could be something that you know, Anything. yeah, Anything. it could be anything. It could be they couldn't sustain them not getting paid well or not being able to sort of have a confrontation. A confrontation का भी एक बड़ा issue होता है कि you feel bad asking someone that, hey man, can you pay me more? You know, because it's a part of our culture also. It's a part of a society. कि यार आपको शर्म नहीं आती है. You know, don't have any shame asking for extra money, you know, because that's why people hesitate. Yeah, I've been there. You know what I mean? And I've been there and I've been out of it in the sense that I learned from all of those things and I learned to find a middle ground. कि हर चीज़ का एक तरीका होता है. You either work against it or you work around it. You got to work around the problem. If someone's being mean to you, you got to work around it. You got to understand where the other person may be coming from. बिल्कुल. So yeah. मुझे हमेशा से एक चीज़ ये बहुत बेसिक बात से स्टार्ट करूँगा कि as musician we invest a lot in our instrument. A lot is an understatement. As player we invest a lot in our हम अपनी drumming में बहुत invest करते हैं. हम लोग को बहुत practice करनी पड़ती है कि हम वो चीज़ हम basically पूरे बैंड को चला रहे होते हैं पीछे. हमसे सारी चीज़ें लीड कर रही होती हैं. हमने कुछ गलत किया, एक अच्छा ड्रमर नहीं है, अच्छे बैंड जितना अच्छा हो, पीछे जो एक ड्रमर अगर अच्छा नहीं है तो इट वोंट वर्क. Buddy Rich said something very हाँ ये किसी ने कहा था. Buddy Rich. मैं बहुत बेसिक सी एक बात करूँगा कि एक ड्रमर जो हम एक स्टिक एक गेग पे यूज़ करते हैं जो कि 4-5 टूट जाती हैं, वो एक स्टिक जो है वो 2000 रुपए की आती है सही वाली. True. राइट. तो 8000 रुपीज़ तो वहीं गए. तो ये एक आर्टिस्ट जो सिंगर है हमारा और एक जो म्यूजिशियन है, ये उसके बीच के मेरे ख्याल से एक कम्युनिकेशन एरर है, ये अंडरस्टैंडिंग का एक एरर है जो कि मैं भी आज तक सिंगर की भी समझ में नहीं आया, ना सिंगर ने उस चीज़ को मैं भी समझने की कोशिश नहीं की जो कि उनको करना ही नहीं समझनी चाहिए कि एक अगर स्ट्रिंग टूट जाती है तो पूरा सेट ज़ाया हो जाता है. You know? Then he has to buy a new set which will cost him around 4-5,000. मैं अगले जन्म में ना सिंगर बनूंगा क्योंकि सिंगर ने आज तक एक माइक भी नहीं खरीदा अपने लिए. Yeah. तो and then we have to Singer pay washing machine. Gambi. Then we have to pay. He's not listening to me. I'm listening. Gambi. Hey, he's not listening to me. वो सिंगर वॉशिंग मशीन में अटक गया. No, I just had a thing. Wow. No investment. No investment. अच्छा हाँ पता नहीं मैं हाँ
पता नहीं क्या, हाँ फिर भूल गया मैं। बेसिकली ये ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ज़रूरी है, जो भी है। ये बात बड़ी फनी हो गई है, वरना तू बोल यार, नहीं तू बोल, अबे एडिट कर देंगे यार। सिंगर और म्यूजिशियन के बीच में एक कम्युनिकेशन Singer has to buy a ये new तो set of strings. कम्युनिकेशन गैप है। कम्युनिकेशन गैप होता है। बोलो बोलो बोलो। Singer has to buy a new set of strings. वाओ। ये भी आगे से आ रहा है। हाँ ये एडिट नहीं होगा। हाँ, क्योंकि ये एक ट्रांसपेरेंसी के वो कितना कमा रहे हैं और वो कितना दे रहे हैं, ये तो खैर ये अब ऊपर वाले का और उनका मामला है। और यहाँ पे तो मैं कभी इसके अंदर घुसा भी नहीं है। वही अल्फ्रेड वाली बात है कि अल्फ्रेड ने बोला कि यार दिस इज व्हाट आई डिजर्व एंड आई शुड बी गेटिंग पेड दिस मच एंड दिस इज व्हाट आई नीड। हाँ, जो मेरा आप bills, कैलकुलेशन you लगाते have your हैं, equipment. यू नो That's ड्रमर्स के साथ टेकी भी होते हैं जो ड्रमर्स को हेल्प करते हैं, बिल्कुल, बिकॉज ये सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट नहीं, यू कैन सी दैट देयर आर लाइक सो मेनी, जस्ट लाइक यू नो 5 टॉम्स हैं, इतने सारे हैं, मरे से मरा भी सेटअप आप ले जाएं तो इट्स टू मच, यू कांट हैंडल इट अलोन। उस टैकी को भी पे करना है, तो ये एक अंडरस्टैंडिंग की बात आ जाती है जो कि मेरे ख्याल से एक मैनेजर सबको समझ लेना चाहिए। सिंगर को They should समझ लेना understand this. चाहिए कि हमारा अगर हेड एक फट रहा है, ड्रम हेड जिस पे आप यू नो हिटिंग ऑन इट, इट्स 4000 मैक्स, बिल्कुल। और स्टैंडर्ड 4000 रुपए का एक हेड आता है, वो फट गया तो वो भी गया। तो अगर आप इफ यू प्लेइंग म्यूजिशियन वेरी लेस, तो वो तो उसकी जो है वो मेंटेनेंस ही भी उससे शायद पूरी ना हो पाए। True. तो ये मे बी ये एक अंडरस्टैंडिंग जो है बिल्ड होना बहुत ज़रूरी लेकिन है। आई थिंक यू हैव टू बी रियली स्ट्रेट फॉरवर्ड। Yeah, जैसे also आई very थिंक important. वी आर ब्लेस्ड, Yes. you Rahat, Atif, Yeah, me we all and are all, blessed, yeah. me blessed, strings, yeah. हम ब्लेस्ड हैं कि हमारे लोग समझते हैं समझते हैं ये चीज़ें। ये चीज़ें True that, समझते true हैं। that. लेकिन उसके अलावा देयर आर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स जो मैंने देखी हैं कि यार बहुत कम उनको अमाउंट दी जाती है, जिससे वो पता नहीं एक दिन में ख़त्म हो जाते होंगे या 2 दिन में ख़त्म हो जाते होंगे। बट Or problem, I'll tell you the problem where it lies, that अगर आपका काम rolling में चल रहा है, if you are constantly playing, then it's fine. It's fine, yeah. But nobody ever anticipated that something like this pandemic would happen. बिल्कुल। And that's when you come to realize that if I had acted upon the fact that what my worth is and what I should get, what my fair wage should be, Yeah. we wouldn't be in this turmoil right now, basically. And that's where I feel, I genuinely feel for musicians out there कि यार it's not fair. It's not fair what goes on, just because of, like I said, it's a part of your culture. It's a part of society that you're not supposed to go out and ask. Because I know when I asked, someone turned around and told me, आपको शर्म नहीं आती है पूछते हुए, क्योंकि वो मुझसे बड़े उम्र में थे। हाँ, उन्होंने ये बात की मुझसे कि मैंने उनसे पूछा जी आप मेरे पैसे बढ़ा दें, उन्होंने बोला बेटा आपको शर्म नहीं आती है इस तरह से पूछते हुए। I didn't understand how it was me being shameless asking. So like for instance, whenever I do a project and someone says that okay, this is what I will charge you, and I don't take it as the guy is overcharging me, I take it as I can't afford the person. There's a difference in this. The amount of time, effort and your energy that has been put into what you do, we are not charging you for the 30 minutes or 1 hour that we'll take to record your song or play your concert. We are charging you for all that time and effort that someone like Aahad or Kami and Alfred and myself have put into खुद अपना ड्रम किट पैक करके गाड़ी में डाल के फिर उसको उतार के आप 3 फ्लोर ऊपर नीचे चढ़ाओ उतारो और प्रैक्टिस करो, पैसे बचाओ, इक्विपमेंट खरीदो और फिर जाके शो भी बजाओ। और अगला बंदा बोले यार आप आउट ऑफ टेम्पो बजा रहे हो, तो फिर घर जाके शर्मिंदगी से जाके आप प्रैक्टिस करें टू गेट योर चॉप्स राइट एंड देन यू गो प्ले दैट शो, यू नो। इनिशियली हसल तो सबका सेम ही है। एग्जैक्टली, इनिशियली तो यही इनिशियली
every single one of us have gone through that drill where you're having to do all of this stuff, and this is not, I'm not talking about weeks or months, it's years. Yes. It takes years into improving yourself as a musician. Till date. To date. और वो ये एक चलता रहता है. You keep jumping different levels, you keep getting better and better and better. You start understanding, you learn how to adapt. Now Aahad is doing stuff with strings, he's doing stuff with velo, he's doing stuff with Bisconi, right? And every single track that I've heard that he's recorded, including the one we just heard, he's playing different everywhere. You're adapting to the songs. You're adapting to the songs. The one versatile like the drummer, stuff that you're doing in Bisconi. दूर हो रहा आज ये खाना खिलाएगा. यार ये क्या हुआ? तारीफ किए थे. आज ये खाना खिलाएगा. एक और. So yeah, again I think the conclusion of this discussion is basically is know your worth. अगर आपको लगता है कि आप जो पैसे कोई आपको दे रहा है किसी भी काम के लिए, कुछ भी हो सकता है, आप बैंक की नौकरी करें, आप कुछ भी काम करें, लेकिन अगर आपका घर नहीं चल रहा उससे, उसमें गलती आपकी है, किसी और की नहीं है. बिल्कुल. उसमें आपकी गलती है. अगर आपको बजटिंग नहीं आता है, और ये this has got nothing to do with how well or how bad you play. It's just basic understanding, क्योंकि ये दो चीज़ें जो है ना बहुत important होती हैं. I feel for us as musicians that we have to keep one side of us कि यार घर चलाना है और दूसरी तरफ हमने म्यूज़िक करना है. और एक बड़ा interesting, I feel blessed that I get to do something that I love. Basically All of us वो एक कहावत है कि choose a job you love the most and you'll never have to work a day in your life. You know, so this is a blessing for people like us, and for all those people out there who really love banking, I guess, and are working in a bank. I don't know if that's a thing, but the fact that you have to understand the business side of it, and then understand the creative side of it, and if both of those things are in balance, it just, you end up making great music. You end up making a lot of people happy. You end up entertaining a lot of people. You end up surviving in the industry. Yeah. बेसिकली एक चीज़ और भी है ना कि हम म्यूजिशियन का कोई मैनेजर नहीं होता. जैसे you know, इंश्योरेंस भी नहीं होता है, कोई इंश्योरेंस नहीं है, सैलरी भी नहीं होती है, कोई मतलब अगर हमें कॉल आ रही है तो वो जो awkward पोजीशन है पैसों की बात करने वाली, पोजीशन इम्पॉसिबल होता है. हाँ, it's like पोजीशन इम्पॉसिबल. वो पोजीशन और इम्पॉसिबल. उसके अंदर ये भी आपने ख्याल रखना है कि बदतमीजी ना हो जाए. राइट, क्या यार आप इतने छोटे हैं और आप मुझसे पैसों की बात कर रहे हैं, तो आपने मुझे कॉल ही क्यों की है? एग्जैक्टली. यू नो, एक सिंपल सी बात है यार. देखो मैं काम कर रहा हूँ, आप मुझे पैसे देंगे, मेरा घर बाहर चलेगा, इसमें बदतमीजी की क्या बात है? तो वो ये भी एक मसला है कि हमारा कोई मैनेजर नहीं है, और हमारा मैनेजर बनता भी नहीं, पता नहीं शायद. तो आधे पैसे तो आपके मैनेजर ले जाएगा. आधे पैसे तो आपको मैनेजर ले जाएगा, क्योंकि आपको तो इतने मिल ही नहीं रहे. बट माशाल्लाह वी आर ब्लेस्ड कि हम अब उस ऑकवर्ड पोजीशन में नहीं हैं. हम नहीं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह. But for those who are, we would strongly recommend that you re-evaluate yourself. बट इतना भी नहीं कि जो बच्चे शुरू कर रहे हैं वो अभी से बहुत ज़्यादा पैसे मांगने लग जाए, कोई काम ना करें. You have to find a balance and you know see where you're at and उसके हिसाब से. जैसे गंभी कह रहे हैं कि यार you know कि ये म्यूजिक बजाना एक फ़र्क बात है, अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना और वो एक अलग चीज़ है altogether. लेकिन वो एक मेन चीज़ है, बहुत ज़्यादा main. अगर आप नहीं करोगे वो एडजस्ट, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आएंगी कि आपके पास खाने को नहीं है या आपके पास रेंट नहीं है, जो भी है. लेकिन आप म्यूज़िक बजाएं और अपने सेविंग्स भी करें.